Good morning, class. Today we'll start the next topic, that is table. So in this topic we will understand how we are going to insert the table and what are the different kinds of functions or what are the different kinds of facilities that is provided by the table. So let us start this topic. A table is a grid of rows and columns that is used in MS Word to present information in tabular form. This makes it easier to read or interpret the information. MS Word provides variety of ways to format the table and edit the content inside. So what do you mean by this particular paragraph about table is that the table is basically made up of rows and columns. So the definition of table itself is the table is a grid of rows and columns, or you can say that table is made up of rows and columns. It can be the minimum number of rows and column required to make a table is 1, and maximum number can be anything according to the user capability or according to the user use. So this makes it easier to read or interpret the information. That means table makes the data more presentable and or interpret the informations very easily. So let us move to the next topic, that is how to insert a table. So let us read out this paragraph. Place the cursor on the document at the place where you want to insert the table. Click on Insert tab, click on Table icon. So, a list of options showing number of rows and columns will appear. Select the required rows and columns you want in the table. As you are selecting, MS Word will show you a preview of the table on the document. Select the required number of rows and columns and click on the box. That means what are the steps to insert a table is that first we have to click on the Insert tab icon present on the menu bar. We have to select Insert tab. On the Insert tab option, you will get an option of Table icon. We have to click the Table icon option. After clicking on the table icon, it will show the number of rows and columns. Then we have to select the number of rows and columns that we want on our presentation or on our document. So after we have to select the number of rows and columns by dragging the mouse on the table icon, as you can see in this diagram. So we have click on the insert menu bar option. On this insert menu bar option, there is an option of table. After clicking on table option, we'll get a number of rows and columns options over here. Then we have to select the number of rows and columns what we want to insert in our document. So in this way we can insert table in our document. So next topic is adding rows and columns. So how we are going to add extra rows and columns in our table. Let us read out the topic. Now suppose there is no space in the table, but we have to add one more below. So first point is right click on the bottom row, select Insert tab from the list, select on Insert row below. A row will appear below the last row. We can also insert columns from the Insert tab. As you can see in this particular diagram, the cursor is here. I have clicked the I have clicked right click with the help of mouse. After clicking right click, we'll get a menu bar like this. In this menu bar option, there will be option of insert. Then we have to click on insert option and have to select the then we have to select on where we have to place the column or row, whether it is left, right, above or below. In this way we can insert a number of rows and number of columns in our table. So our next topic is deleting rows and columns. Now we have seen adding rows and columns. Now we have to see if you don't want extra rows and columns, then what is the procedure to delete the rows and column. For that we have to follow these steps. First point is right click on the row or column that you want to delete. Second, click on delete cell. Third, select delete entire row or delete entire column according to your preference and select OK. The specified row and column will be deleted. As you can see in this diagram, according to the first point, what we have to do, we have to right click on the cell or the row or the column which we want to delete. After pressing the right click button from the mouse, we'll get a menu bar like this. In this menu bar option, you can see the option of delete cells. हमें क्या करना है, जो रो या कॉलम हमें नहीं चाहिए उस पर हम राइट क्लिक करेंगे माउस की मदद से, और राइट क्लिक करने के बाद विल गेट ए ऑप्शन लाइक दिस. हमें एक ऐसा ऑप्शन आएगा
एक मेन्यू बार खुलेगा, उस मेन्यू बार पे एक ऑप्शन रहेगा डिलीट सेल का, हमें उस डिलीट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम उस डिलीट सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हमें एक दूसरा बॉक्स इस तरह हमारे सामने पॉपअप विंडो खुल जाएगा एक डिलीट सेल का। तो हमें क्या करना है, हमें शिफ्ट सेल लेफ्ट, हमें लेफ्ट साइड से सेल को डिलीट करना है तो लेफ्ट, अप से करना है तो अप, डिलीट एंटायर रो करना है तो डिलीट एंटायर रो पे क्लिक करेंगे, डिलीट एंटायर कॉलम करना है डिलीट एंटायर कॉलम पे क्लिक करेंगे। दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूजर सेलेक्शन। ये यूजर के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो इन सब में से कौन सा ऑप्शन वो सेलेक्ट करना चाहता है। तो उसके बाद हम ओके करेंगे एंड दैट सेल विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल। So our next topic is merging two cells. Merging का मतलब होता है मिलाना। हम यहाँ पे दो सेल को मिलाएंगे एक में, कैसे मिलाएंगे वो हम अभी देखेंगे। So let us read out this topic. You can join two separate cells using the merge cell feature in MS Word. First point, select the cells that you wish to merge. Right click on the selected part. Click on merge cell from the list. The selected cells will be merged. As you can see in this particular, in this two diagram, let us concentrate with the first diagram. So what this has told in the first point is that select the cell that you want to merge. As you can see here, the black portion, it is written Ram and Sita. यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम में दो अलग अलग नाम लिखा है, एक में राम लिखा है, एक में सीता लिखा है। तो हमें इन दो सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ माउस वी हैव टू सेलेक्ट करने के बाद हमें माउस की मदद से ही राइट क्लिक करना है। आफ्टर क्लिकिंग राइट क्लिक विद द हेल्प ऑफ माउस विल गेट ए मेन्यू बार ऑप्शन लाइक दिस। इस मेन्यू बार ऑप्शन में हमें एक ऑप्शन रहेगा, उसका नाम है मर्ज सेल्स। देन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। जैसे हम मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, हमने दो सेल जो सेलेक्ट किया था राम और सीता का, दो अलग अलग थे, अब वो एक में आ गए। एज यू कैन सी इन द सेकेंड डायग्राम, दैट इज राम और सीता जो पहले अलग अलग थे अब वो एक सेल में आ गए। सो विद द हेल्प ऑफ मर्ज सेल वी कैन मर्ज टू सेल। So our next topic is splitting cells. So now let us understand what is splitting cells. अब हमने देखा कि हमने दो सेल को मर्ज किया था, that is ये राम एंड सीता जो अलग अलग थे उनको एक में मिला दिया था। अब हमें क्या करना है, इसी जो हमने जो मिला दिया था इसी सेल को हमें अलग करना है, that is known as splitting cells. So let us read out this topic. Right click on the cell and select split cell option. Change the number of rows from 1 to 2 and select OK. The cell will split in two rows. For example, you can see here जो हमने पहले वहाँ पे बनाया था राम and सीता और on the one cell. So we have to select the cell and then we have to click the right mouse button with the help of mouse. After clicking we'll get an option like this. In that there will be option of split cell. यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, there will be option of split cell. तो हमें इस split cell के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर हमें एक नया पॉपअप विंडो ओपन होगा। यहाँ पे लिखा रहेगा स्प्लिट सेल, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स में स्प्लिट करना है या नंबर ऑफ रोज में स्प्लिट करना है। सो हियर द नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2 एंड नंबर ऑफ रोज इज 1. यू कैन चेंज दिस नंबर अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। सो आफ्टर दैट वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो राम और सीता दो अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे। यू कैन सी हियर राम पहले कॉलम में, सीता दूसरे कॉलम में। सो इन दिस वे वी कैन स्प्लिट द सेल्स। Next we'll go to table styles. So let us read out the topic. So far table that we are working on is a basic one, but with MS Word we can add attractive styles to the table. The table styles contain different designs including shading, fonts, borders, etc. So let us understand this topic, table style. अब तक जो हमने देखा वो नॉर्मल टेबल था, जैसे हम with the help of pencil and scale will draw on a notebook. That is the same way we can draw on the, for the simple table we can draw on the MS Word document. But if you want to create or if you want to do some creativity on the table, so what we have to do, we have to, after selecting the table number of rows and number of columns from the insert menu bar option, then what we have to do, there will be option of design tab. As you can see here, there will be option of design tab. Then we have to click on design tab. When we click on design tab, we'll get a different types of table options over here with different colors. तो हमें यहाँ से जो भी कलर पसंद है, हम जैसे हमने ये कलर पे क्लिक किया और हमारा पूरा का पूरा टेबल उस कलर में चेंज हो गया। So in this way you can apply different table styles to your text document